Okay, so once again, good evening to all of you. Namo Namaha. I think Arman wants to read answer for Madhyam Bhasha. Anybody else wants to read, then you may unmute yourself. Yes, Arman, unmute yourself. Yes, Miss. Namo Namaha. Now you Namo can hear Namaha. me. Yes, yes, you are audible. Yeah, start. Read the question and then your answer. Arman, are you speaking something? Because we can't hear you now. Try to unmute again. Yeah, say something. Sorry, we can't hear you still. I think you are saying something, but we can't hear you. Okay, no problem. Just check your mic and let me know in the chat box. Then we will definitely give you a chance to read your answers. Your answers, queries are most welcome. And I would like if you are all are speaking in the lecture, uh, taking participation in Sanskrit speaking, giving answers. Okay. Yeah. So now again, this Lekhana Kaushalam 3 is there for your unit test as well as semester exam. And some schools, like mostly in Ghatkopar, the exam is nearby, and in syllabus, uh, there is Lekhana Kaushalam 3. So we will begin with this very simple part. Lekhana Kausalam, of course, it is a writing skills. So it requires some expertise, some grammar practice. But in ninth, you have to complete just a blank given. Okay, paragraph or the samvad is already given here, and you have to just complete it with the help of words already given in the bracket. So isn't it a beautiful or a very easy task that just you have to understand it and you have to complete it? Okay, and hence you can score more and more marks in writing skills also. In other subjects we find it difficult. Writing skills is a difficult part for us, but in Sanskrit not so, because answers are in front of you logically. And अगर पहले से पढ़ाई करके गए हो तो same paragraph, same words, same answers and same questions will be there. Okay. I think in chat box, yes, Riya got 20 out of 20 in Sanskrit paper. That's fantastic. Okay, congratulations, Riya, and keep it up. Keep the score same for all your coming exams. Okay, so 100 का 80 का paper है, 80 out of 80, 20 out of 20. Try to be more fantastic. Wow, Harshit got 33 out of 34 in mock test. That's very nice. Great, great, great. So I think your batch is very much active and working about new topics, Sanskrit or new subject, new language. That's very nice. It is appreciable. Yes, Arman. Yes, Hello, now you can hear me. yes, yes. Now you're audible. Okay. Just read a question once and then start your answer. Swabhavakrupanah. No, again, your voice is not coming now. It is stopped. Miss now? Yeah, yeah. Yes, Miss. Sometimes it goes down. So answer is Manorajasya Phalam. Hmm. Manorajasya Phalam is a lesson which is Your voice is breaking, Arman. Manorajasya. Now, Yes, yes. Read, read. Parikshit Karakam from Panchatantra composed Vishnu Sharma. Hmm. A man named Swabhav Krupana slept under a
under a sattu flower full of pot, while under a sattu flower. Uh, while doing so, he was planning and thinking about his thinking. He planned that he will sell the pot filled with sattu flour in the piece. Then after it he will buy goats, cows, and Yeah, again the voice is breaking. now Yeah, now you're audible. From cows, you have to read again. From cows. cows and buffaloes. Then after it he will marry with daughter of a wealthy man, Hmm. and then they will have a son named Soma Sharma. Then after it one day Again the voice is breaking. eh, in front of Then, huh. his son. And Yes. then Swabhav Krupana, the father of Som Sharma, Hmm. will come out of his working field, and then he will hit the dog and the and instead of hitting the dog, he had hit the sattu pot, and Hmm. all the base of dream has gone to vain. Okay. So what will be the conclusion line here? And conclusion is daydreaming actually leads to lose to the existing thing we have. Okay, okay, correct, correct. So structure is nice, but when you are writing a main body, in that don't use that word hitted. Hit, hit, hit. Okay, past participle and past tense is hit only, na? Or it is Yeah. hitted. Huh. So use hit, hit, hit there, and you are framing a sentence correctly in future tense. That's very good. But when you are starting this story, now just mention there that this Swabhava Krupana is daydreaming. Uh, the mentioned things or something like that. He is imagining the things about that sattu ka flour or atta. ये starting में थोड़ा mention करना and then start that story. Otherwise, the structure and the content is good. Okay. Yeah, very good. Yeah. Thank you, miss. So, students, now you can get the idea how to write Madhyam Bhasha. And Arman tried this answer by his own. Okay, वो दिख रहा है क्योंकि बहुत easy words में उसने लिखा हुआ है. And this is expected by examiner. It is not expected कि आप बहुत ही fancy, difficult English में या कुछ तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या हम कह सकते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए हुए हैं, बहुत नए नए सेंटेंसेस ऐड किए हुए हैं जो कि आप बहुत सारे डाइजेस्ट टारगेट्स या मास्टर कीज से फॉलो कर रहे हो या सब मिक्स कर रहे हो, ये एक्सपेक्टेड नहीं है. रेफर दैट आंसर एंड राइट द आंसर बाय योर ओन एंड हेंस इट इज कॉल्ड माध्यम भाषा. Okay, answer in accepted medium which should be come by own. Okay, so this is how you have to practice for Madhyam Bhasha. Keep practicing and let me know your answers in every lecture, one by one. Then we will come to the point now, that is Lekhana Kaushalam 3. So as I said, this is very simple because you have to just fill in the blank. So let's understand the meaning of it. Just open your textbook, page number 69. Be ready with the pencil to write down the answers and meanings of new words. Okay, so first Manjushata Shabdan Yojayitva, you have to complete the samvad in the first question.
Yes, so Manjushatah Shabdan Yojayitva Samvadam Purayata. Samvada is conversation. From the picture you get to know this conversation is between कौन conversation कर रहा है? कौन से objects में conversation हो रहा है? What you can observe in pictures given here. Yes, some of you are now answering. Very good. It is tabla and harmonium. Okay, so harmonium and tabla, these both are the objects, but यहाँ पे कार्टूनिश टाइप में उनके दोनों में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ऐसा कुछ थीम लेखक ने, राइटर ने यूज किया है. देखते हैं क्या क्या वर्ड्स यूज किए. सबसे पहला है संवादिनी. संवादिनी इज द नेम ऑफ हारमोनियम and Talavadyam is the name for tabla. Okay, Samvadini is the character name of harmonium and Talavadyam is tabla. So let's see what they are discussing about. So first is always whenever you have such types of questions for Lekhana Kaushalam, you have to first refer the Manjusha. Okay, always be focused on your goal. Goal क्या है हमारा? Complete the blanks. Blanks में क्या complete करना है? Words को ऐड करना है. तो पहले वो वर्ड्स को जान लेना, उसका मीनिंग जान लो. फिर जैसे जैसे आप स्टोरी, संवाद या आपका ऐसे रीड करोगे, देन यू विल गेट टू नो which word is more apt for this blank. Okay, so first we will, step number 1, we have to focus on Manjusha. Manjusha means glossary given here. So first word is hasya yuktam. Can anybody tell me the meaning? Just guess करो, बहुत सिंपल है. हास्य वर्ड हमने बहुत बार देखा हुआ है, हिंदी मराठी रिलेटेड वर्ड है. हंसना, हास्य. Yes, so yes, correct. So the meaning is smilingly. Okay, smiling face. No, not, it is not laugh, it is smiling face. Hasya yukta, it's smiling face. Then next, hasyasya, वही word है, but now of smile. हास्यस्य of smile. Ending change हो गया. Sya indicates of. Then सुरुद, new word. सबका meaning लिख के रखो, तभी आपको याद आएगा कहाँ पे कौन सा word आपको complete करना है. Next, सुरुद. Very good. Friend. Yes, Yashika. Perfect. Surud is a synonym for friend. Sakha. Mitram. Mitram, Sakha, Surud. These are the synonyms. Next, Vadakaha. Vadakaha. मराठी में ये वर्ड यूज होता है, वादक, तबला वादक. यस, प्लेयर्स. वेरी गुड. प्लेयर्स यानी कि खेलने वाले नहीं, यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम यूज करने वाले हैं, the one who will play that music on harmonium or tabla, उनको हम कहेंगे वादकाहा. Okay, then next, abhavam. Abhavam, which is a past tense word. Yes, right, I was. Very good. Then next, komalataya. Komala is soft, and यहाँ पे तृतीया विभक्ति यूज की है. Very good, Yashika. So the meaning will be komalataya, softly. Yes, Harshit, correct. Then very simple known word, bala naam. आम नाम षष्ठी विभक्ति का काम. Yes, षष्ठी विभक्ति है, तो absolutely right. You are guessing correctly that the meaning will be of. Okay, and of children. Of children. बहुवचन है. Okay, then next, शालायाम. शालायाम, जैसे मालायाम वैसे शालायाम. Which vibhakti it is? Yeah, answer is correct. In school. So which vibhakti?
Shalayam, Malayam. Do you remember the tables of 8th standard? Harshit, please check the table. Yes, Tanvi, very good. Saptami Vibhakti. शालायाम, मालायाम, सप्तमी विभक्ति. रिवाइज करो. देव वर्णमाला बेसिक टेबल्स है, सब जगह पे आने वाले हैं. नहीं बाय हार्ट है तो उसका चार्ट अभी आज ही अपने कबर्ड पे, वॉल पे स्टिक कर दो एंड स्टार्ट लर्निंग इट. जितने आपके साइंस के फॉर्मूलाज इम्पोर्टेंट है, मैथ्स के फॉर्मूलाज इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ये टेबल्स जो है वो बेस है. देव वर्णमाला, कविमति, वारी नदी, 8th स्टैंडर्ड को भूल के कुछ नहीं होने वाला. Put two or three posters every week to your cupboard or your wall and read it again and again every day. बस बाय हार्ट हो जाएंगे. रीड इट इन एनी ट्यून. जो भी गाना आपको पसंद है वो गाने के ट्यून में उसको ऐड कर दो वर्ड्स को एंड रीड इट. ओके चलो, तो अभी अप्लाई करते हैं ऑल दीज वर्ड्स टू द कन्वर्सेशन ऑफ संवादिनी एंड तालवाद्यम. संवादिनी इज सेइंग डैश अपि अद्य ग्लानः असि. अपि मीन्स, am I audible now? Yes. Okay. Thank you, Harshit and Tanvi. So Samadhini is asking a question. Api adya glanah asi. Glanah means tired. Adya means today. Api is used for question. Asi means you are. Are you tired today? Samvadini asking to तालवाद्यम. So क्या यूज करेगी वो वर्ड सबसे पहले? कभी भी हम हमारे फ्रेंड के साथ बात करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं? उसका नाम लेते हैं, प्रॉपर नाउन, या फिर वी विल कॉल यस ओ फ्रेंड. वेरी गुड. सो फ्रेंड के लिए यस याशिका, रिया एंड याशिका, रिया, अरमान. वेरी गुड. सो वी विल यूज द वर्ड सुरुद. Others please answer. This is very simple. Be attentive in the conversation. This is for you. Yeah. O friend is a sambodhanam. Very good, Ayan. So we will use Surud api adya glanah asi. ओ मेरे फ्रेंड, क्या आज थक गए हो? Are you tired today? तालवाद्यम is now replying. आई. अभी संवादिनी हारमोनियम जो है वो स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए वहां पे यूज किया आई. ओ माय डियर फ्रेंड, अद्य टुडे डैश संस्कृत दिनस्य कार्यक्रमः अभवत्. आज समथिंग समथिंग, वो ब्लैंक में कुछ तो लिखना है हमें. संस्कृत दिनस्य ऑफ संस्कृत डे कार्यक्रमः means the program abhavat was done. Okay, there was a program of Sanskrit day celebration in school. Yes, तो यहाँ पे कौन सा word missing है? Very good. In school. Many of you are answering correct. Tanvi, the meaning of Surud is friend. Oh friend, संबोधन है. Okay, yes, all of you are answering correct. Yashika, Shruti, Ayan, Riya, very good. So the answer is yes, Arman, correct. Shalayam. So अद्य शालायाम संस्कृत दिनस्य कार्यक्रमः अभवत्. आज स्कूल में संस्कृत डे का फंक्शन था, प्रोग्राम था. अभी ये और कुछ एक्सप्लेन कर रहा है. तबला यानी कि तालवाद्य. तत्र देर, वो प्रोग्राम में डैश गीत गायन समये बहुताड़ितः वादितः च अस्मि. वहां पे समथिंग समथिंग गीत गायन समय. गीत गायन मीन्स क्या? सिंगिंग. Okay, while singing, at the time of singing, ताड़ितः and वादितः, मुझे बहुत बजाया गया है. Okay, तबला जोर जोर से बजाया गया है. ताड़ितः हिट and वादितः is also मतलब I played. तो हमें पता है तबला कैसे बजाना है, तो तबले को बार बार हिट करना पड़ता है, देन वो जो उसमें से स्वर है वो बाहर निकलते हैं. एंड इसीलिए वो बोल रहा है कि आज मुझे बहुत जोर जोर से हिट किया गया है. आई वॉज प्लेड वेरी मच एट द टाइम ऑफ सिंगिंग. तो अभी यहाँ पे तत्र के बाद हमें क्या लिखना है? हु प्लेड इट?
किसने ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो प्ले किए रहेंगे? ऑफ कोर्स, वेरी गुड, यू हैव आंसरिंग करेक्ट, यू आर ऑन द सेम एंड राइट पाथ. वादकाः, अरमान श्रुति अरमानन श्रुति, बाला नाम नहीं, वादकाः. जो प्ले करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट उनको हम कहते हैं वादकाः. यस, यस रिया, करेक्ट. सो वी विल ऐड देयर वादकाः. Just a minute. Okay. Yeah, actually, we will not add here Vadakaha. The more appropriate word here will be Balanam Gita Gayana Samay. Because again, one more sentence is there about Tadayanti. So we will use Vadakaha there. Yes. So I think only Arman and Shruti have answered correctly. And Riya also. Balanam. Vadakaha, we have to use it afterwards. Okay, this is how we have to check. See, sometimes we feel, यहाँ पे भी हम imagine कर सकते थे कि वादक are playing that instrument, but यहाँ पे हमें meaning लेना है बाला नाम गीत गायन समय. बाला नाम यानी कि of students और of children. गीत गायन समय, उनका जब प्रोग्राम था सिंगिंग का, तभी बहुताड़ितः वादितः अस्मि, तब मुझे बहुत जोर जोर से हिट किया गया and I played very much at that singing program. संवादिनी says आम. आम means yes, oh, या फिर yes. अहम अपि तत्र dash. अहम अपि means I am also तत्र. तत्र means there. फिर उसके बाद हम कौन सा verb use करेंगे? वेरी गुड, अभवम, मैं भी वहां पे थी. I was also there. So I was के लिए हमें याशिका ने बताया था कि I was एक कौन से वर्ब का मीनिंग है? अभवम. So we will use the word अभवम here. अहम अपि तत्र अभवम. Okay. Then next, balaihi sah. Balaihi means all the children. So with all the children, swara tala yukta aham api agayam. Swara tala yukta means बहुत ही ट्यून में, रिदम में. अहम अपि means I am also, and agayam means I was also singing there with a good rhythm and tune. This is said by संवादिनी. मैं भी बहुत ही अच्छे ट्यून में, सुर में, ताल में सभी बच्चों के साथ गा रही थी. ओके, चलो. तालवाद्यम says परंतु त्वं न ग्लाना असि. But you are not tired, you are not looking tired. Dash तव वदनम उल्लसति. Vadanam means face, mouth. Ullasati means pleasant. In fact, आपका चेहरा बहुत ही pleasant, प्रसन्न दिख रहा है. This is said by तालवाद्यम to संवादिनी. So कैसा फेस होगा? प्रसन्न फेस यानी कि प्लेजेंट फेस कैसे दिखता है? क्या होता है उसके ऊपर? वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हास्य युक्तम यूज करना है वर्ड. स्माइलिंग फेस. सो योर हास्य युक्तम वदनम उल्लसति. Your smiling face is looking pleasant. Then Samvadini says, Mitra, oh my friend, Twam dash tadayanti, atah tvam glanah bhavasi. Twam means you. Tadayanti, you are played by. यहाँ पे we will use word vadakaha. Yes. So vadakaha tvam tadayanti, players played you or play you. Atah, hence, you are ग्लानः भवसि, hence you are tired. तबले को बहुत हिट किया जाता है and इसीलिए शायद वो टायर्ड हो गया है, ऐसे हारमोनियम उसको बता रही है. माम तू, बट आई एम अतीव डैश वादयंती. बट हारमोनियम कैसे बजाया जाता है? हिट किया जाता है हारमोनियम को. We have to use that or play that harmonium with the fingers and very softly we have to play. एंड इसीलिए वहां पे सॉफ्टली के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? वाओ, फैंटास्टिक. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली.
Great, great, great. Yes, Harshit, Arman, Yashika, Ayan, Riya, Shruti. Very good. All the answers are correct. Komalataya will be the perfect word there. So, माम तो अतीव कोमलतया वादयन्ति, मुझे तो बहुत सॉफ्टली प्ले किया जाता है, तुझे हिट किया जाता है बाय द प्लेयर्स. अतः हेंस अहम मधुरम गायामी, हेंस में बहुत ही स्वीट वॉइस में स्वर देती हूँ, ताल देती हूँ, म्यूजिक देती हूँ. मधुरम स्वीट, गायामी सिंग और गिव म्यूजिक. idam mama dash rahasyam, rahasyam means this is a सस्पेंस, और ये राज है, सीक्रेट है. हम बोलते हैं ना, यही तो मेरी खूबसूरती का राज है. ऐसे बहुत सारे एड्स हम देखते हैं. तो वैसे इसके हैप्पी रहने का राज क्या है? इदम मम हास्यस्य रहस्यम. वेरी गुड. Here we will use the word hasyasya. Yes, yes, yes. Absolutely correct answer. So hasyasya of my smile. So this is a secret of my smile. ये तो राज है मेरी खुशी का, मेरी स्माइल का, कि मैं बहुत ही सॉफ्टली प्ले की जाती हूँ, इसीलिए मैं खुश रहती हूँ. And hence here we have completed our first Samvada from Lekhana Kaushalam 3. Okay. So I'm just revising all the answers for those who have not written all the answers. First here we will add answer Surud. Second blank answer will be Shala Yam. Third will be Bala Nam. Then we have to use verb Abhavam. After that we have to use Visheshan Hasya Yuktam. Then we have to use Vadakaha Tadayanti. After that, next word we have to use again a Visheshan Komalataya. And then we have to use the next and the last word as Hasyasya Rahasyam. Hope you have written all the meanings. You will get answers anywhere in the digest, but the meaning should be known by you. Any doubt regarding this first Samvada? Okay, let's begin the second Nibandha. Now this time we have Nibandha here. And this Nibandha is very much related with all of us with the recent times. As you can observe, the Nibandha is regarding Sanganakaha. Sanganakaha is computer. So let's first step number 1 क्या होगा हमारा? What will be the step number 1 in these type of writing skills? Manjusha, perfect. You have to first focus on Manjusha. Yes, and write down the meanings. Very good, Ria. And then you have to read the paragraph given and complete blank one by one. Yes, Harshit. Step number 1 is to understand the bracket words properly. चलो तो फिर कर देते हैं step number 1. पहला है अंतरजाले. अंतरजाले. What is अंतरजाल? Internet. Antarjala is internet. So Antarjale in internet. Yes. Antar is inter and Jala is net. So internet, Antarjal. Next, Manushya, very simple word. We all are Manushya. Manava, man. Very good. Avashyakaha. Avashyakaha. Again, Marathi wala word. Same word. Important, necessary. Very good. Karyani. Karyani. जैसे कार्यम means a task, karyani means many tasks or works. Yes, correct. बहुत सारे काम. Then बहुवचन है बस. Then next etani. What is this etani? Which sarvanam is this? This is a sarvanam, right? But which sarvanam is this? Etat sarvanam. Very good. Etat. Yes, Arman, Harshit, very good. So etat sarvanam napunsakalingam प्रथमा द्वितीया बहुवचन, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं. तत् सर्वनाम नपुंसकलिंगम प्रथमा द्वितीया बहुवचनम. Okay, then next
या दिस इज जस्ट अ फॉर्म एतानी हम लोग यूज करेंगे, बहुवचन है तो बहुवचन वाले वर्ड के साथ यूज करना है। सुयोग्येन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुयोग्येन? व्हाट इज सुयोग्य? बेसिकली proper, appropriate, very good, yes, and it is written in tritiya vibhakti, so let's see उसका मीनिंग कैसे मैच करना है। चलो नेक्स्ट, समस्याः, समस्याः बहुवचन है, समस्याः, वेरी गुड याशिका, हर्षित, प्रॉब्लम्स, यश श्रुति, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, वेरी गुड। देन नेक्स्ट, संगणकस्य, सिंपल वर्ड, संगणकस्य, ऑफ कंप्यूटर, स्मार्ट लोग हो आप, जब भी स्य आम नाम दिखता है अभी बराबर ऑफ बोल देते हो, वेरी गुड। सो संगणकस्य ऑफ कंप्यूटर, so this is how we have done with the meaning of all the words from our Manjusha. Now let's begin with our essay संगणक। संगणक के बारे में क्या क्या essay में हमें लिखना है। First of all, इदानीं तने काले, इदानीं तने काले, इदानीं means in this recent period. Riya, अंतरजाल is internet. Yeah, now please focus on the paragraph. इदानीं तने काले, यानी कि in this recent period or in this recent time, संगणकः, computer, भोजनम इव dash. Bhojanam means like a meal. It is very necessary like a meal. Yes, so for necessary, very good. Yashika, Riya, Shruti, perfect. Quick answers एकदम। आवश्यकः, आवश्यक, so first blank is आवश्यकः। इदानीं तने काले संगणक भोजनम इव आवश्यक, इतना जरूरी हो गया कि जैसे इक्वल टू मील, जैसे हमें रोज खाना लगता है उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, पानी लगता है, वैसे ये खाने पीने के जितने इम्पोर्टेंट हो गया है कंप्यूटर, क्योंकि सब काम उसके ऊपर ही करना है, हमें लेक्चर्स भी उसके ऊपर ही अटेंड करने हैं, प्रोजेक्ट्स भी उसके ऊपर ही बनाने हैं, सर्फिंग भी करना है, गूगल से बहुत कुछ चीजें सर्च करनी है, एंड और जो भी चीजों के लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं। चलो देन नेक्स्ट, संगणकस्य सहाय्येन बहूनि डैश सुकराणि जातानि, बहूनि डैश सुकराणि जातानि, सुकराणि मीन्स easy, with the help of संगणक many dash have become very easy, बहुत काम इजी हो गए हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो आपने अभी परफेक्ट आंसर दिया है, पहले कुछ गलत आंसर्स आ रहे थे मुझे, समस्या एंड ऑल, but abhi the answer is correct, karyani, works, very good. So with the help of sanganak now many tasks are very easy, बहुत ही चुटकी में हो जाते हैं, जैसे कि कैलकुलेशंस हो, देन प्रॉपर हिसाब किताब रखना है तो एक्सेल यूज कर सकते हैं हम, वी कैन मेक अ ब्यूटीफुल पीपीटीज, वी कैन एडिट अ वीडियोस, एंड we may do our projects in word files, and also we can save our pictures, we can modify our pictures, and many things, okay, we can do on sanganak. You can, yes, you can watch YouTube and whatever, Netflix or the series, yes, crop filter, correct, online classes, yeah, that's important. या या जितने भी ऐप है, जो भी आप प्रेफर करते हो, Amazon प्राइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहुत सारी चीजें, या पे मनी, यस, वेरी गुड हर्षित, दैट इज ऑल्सो नाउअडेज वेरी इंपॉर्टेंट, पेइंग मनी ऑनलाइन with the help of your device, any device, then mobile or maybe your internet, computer, laptop, etc. Yes. Now don't tell me all the applications which we use to pay bills and etc. Very good. Then next, ganana karyam bhavatu va, ganana karyam bhavatu va dash अन्वेषणम. Now here ganana karyam means calculation, फिर calculation हो, वा डैश अन्वेषणम, अन्वेषण मीन्स ढूंढना, सर्चिंग, तो क्या सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है, इनफैक्ट सर्च कहाँ पे करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं उसके लिए, यस, यू आर ऑन अ प्रॉपर ट्रैक, करेक्ट, वी यूज इंटरनेट, अंतरजाल, सो अंतरजाले अन्वेषणम, अन्वेषण कहाँ पे करने वाले हैं, अंतरजाले,
We will use here the word antarjale. Antarjale anveshanam. Very good. चलो next we'll move ahead. सह तूर्णमेव कार्यम करोति. तूर्णमेव मतलब यहाँ पे मीनिंग लिख के रखो, दो ये हमें कंप्लीट नहीं करना है, बट तूर्णम मीन्स फास्ट, क्विकली. कैलकुलेशन हो या फिर सर्चिंग ऑन इंटरनेट हो, इट वर्क्स वेरी फास्ट, क्विकली कंप्लीट योर वर्क. कौन? कंप्यूटर. नाउ नेक्स्ट, अधुना तस्य भ्रमणभाषः. नाउ वही कंप्यूटर के आगे के कुछ डिवाइसेस और आगे है, दैट इज भ्रमण भाषा मीन्स योर मोबाइल फोन. टैब यंत्रम मीन्स योर टैब. अंक संगणकः मीन्स योर कैलकुलेटर. राइट डाउन ना न्यू वर्ड्स, भ्रमण भाषा एंड अंक संगणक. भ्रमण भाषा इज मोबाइल एंड अंक संगणकः इज कैलकुलेटर. yes, अंक संगणकः is calculator. अंक मीन्स कैलकुलेशन वाले नंबर, संगणक मतलब उसको कैलकुलेट करने वाला डिवाइस. ओके. डैश रूपाणी प्रचलितानि. रूपाणी मीन्स फॉर्म्स. दीज फॉर्म्स आर फेमस. सो दीज के लिए वी हैव टू यूज आर सर्वनाम. फैंटास्टिक. सो वी विल यूज. wow, the chat box is flooded with the answers and a proper answers. Very good. So we will use etani rupani prachalitani. Okay, so I think you are finding this essays and Lekhana Kaushalam section very easy. Okay, let's move ahead. But with though it is easy, please do write down the meanings of new words because vocabulary should get increased with this Lekhana Kaushalam. This is the main purpose. Yeah, यदि अंतर्जाल सुविधा means internet connection. विद्युत उपलब्धि means electricity, availability of electricity. वान नहीं है, कभी कभी हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अचानक, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इंटरनेट भी चला जाता है, वाईफाई भी नहीं है. स्तः तरी देन क्या होता है? डैश कार्यम न भवति. देन कैसे कार्य नहीं होता है, वहां पे विच वर्ड वी विल यूज? समस्या? नो. Then which word we will use? Avashyaka word is done, Karyani word is done, Etani is also done, Antarjale is also done. Yes, simple word, very good. Now you are on the right track. संगणकस्य कार्यम न भवति. अरे इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो किसका काम नहीं होगा? संगणक का. ओके, कंप्यूटर का. Yes, simple. So we will use here word संगणकस्य कार्यम न भवति. If there is unavailability of the internet connection and electricity is not available, then the work of computer is stopped. चलो नेक्स्ट. तदा अगर ऐसा हुआ एक दिन कि पूरा 10 घंटा हो गया, 10 hours नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, देन क्या होता है? डैश असहायः भवति. हु बिकम रेस्टलेस? मनुष्य. यस, इंसान रेस्टलेस हो जाता है. आज कुछ काम नहीं हुआ है, आज के सभी लेक्चर्स कैंसिल करने पड़े. बच्चे हैप्पी हो जाते हैं, बट स्टिल वो हैप्पीनेस फिर बाद में हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है. yes, lots of difficulties. So hence the electricity and internet is very important for working on computer, laptop or all the devices like mobile etc. चलो देन नेक्स्ट. तस्य अत्यधिक उपयोगेन आरोग्य विषयकाः डैश प्रादुर्भवन्ति. अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक मीन्स excess use of these computers, laptops or mobile phones. आरोग्य विषयकाः related to your health dash प्रादुर्भवन्ति. प्रादुर्भवन्ति means raised
or created, increased. Yes, samasyaha. You will face many problems related to health if you are using excess of these devices. We continuously lectures on computer, then a web series on computer, then chatting on mobile phone, then phoning on mobile phone, which is very harmful for our health. So use it whenever it is very important. Okay, then next किन्तु but तस्य dash सहायेन अस्माकं प्रगतिः भवति. But if you use it in a proper manner, proper या appropriate के लिए कौन सा word है? Yes, जहाँ पे हमारा spotlight है, that is सुयोग्येन सहायेन. And you can observe now, सुयोग्य is विशेषण and सहाय is noun. तो दोनों भी तृतीया विभक्ति में है. सुयोग्येन सहायेन. With the proper help of it, we can achieve a success or we can progress ourselves. अस्माकं प्रगति ही भवति, हमारी प्रगति हो जाएगी. We can progress with this computer actually if we are using it in a good manner for appropriate work. Okay, that's it. So this is how the simple chotu sa essay given in your textbook about Sanganaka. Okay, now I am checking the chat box. If you have any doubt, you may ask the question. Tanvi, Brahmana Bhasha is mobile phone and tab yantram is tab. Nowadays we use tab na for lectures or for reading books, etc. That tabs. Yeah, Anveshanam means search, dhundna. Any other word that you have missed and you want me to repeat? Okay, so I am repeating all the answers for the last time. First answer will be avashyakah. Then next answer is karyani, bahuni karyani. Then antarjale anveshanam is the third blank. Fourth blank will be etani rupani. Fifth blank is sanganakasya karyam na bhavati. Then tada manushyah asahayyah bhavati. After that arogya vishayakaः samasyaः प्रादुर्भवन्ति. किन्तु तस्य सुयोग्येन सहायेन अस्माकं प्रगतिः एव. Okay, so your homework will be, you have to write down both the parts, that is samvad as well as one nibandha in your notebook with a correct answer, and don't forget to underline it. Please practice it because same nibandha or संवाद will be there in your exam, so easily आप exam में वहाँ पे बिना देखे भी answers लिख सकते हो if you have practiced it earlier. Okay, so thank you so much everyone. We will stop here and we will continue with more writing skills topic in the next lecture. Till then, if you want me to start any other topic which is there for your exam, then please let me know in the chat box today or in the next lecture. Do practice writing skills and new words. Thank you so much everyone. We will meet soon. Till then, stay tuned.